Hello everyone and welcome to my channel. In today's lecture we are going to see miscellaneous exercise 4 from question number 1. So let's begin. Now in the question number 1 he is saying that prove that the determinant is independent of theta. Mean students हमको ये प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. तो सिंपली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सपांड द डिटर्मिनेंट एंड लास्ट में एक भी थीटा का टर्म नहीं बचना चाहिए. सो वी कैन से दैट द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. So let's start the expansion along row number 1. So we take the first element, so x into determinant of cover the first row and the first column. So we get here minus x square minus 1. Change the sign of this element, we get minus sin theta into cover the first row and the second column. तो हमको मिलेगा minus x sin theta and minus cos theta. And then the third element we take plus cos theta into cover the first row and the third column. So determinant of these four elements, so we get minus sin theta plus x cos theta. Okay, now we simply open the bracket, so we get minus x cube minus x plus x sin square theta plus sin theta into cos theta minus cos theta into sin theta plus x cos square theta. अभी देखो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है यहाँ पे. cos theta sin theta and sin theta cos theta would get cancelled. Now if you observe these two terms, तो हमारे पास x कॉमन है इन दोनों के बीच में. तो if you take x कॉमन, we are going to get sin square theta plus cos square theta in the bracket, which comes out to be 1 according to the identity. So we are left with minus x cube minus x plus x. So x and minus x also will get cancelled and you get your answer as minus x cube. Since there is no term of theta remaining in the last step, we can say that D is independent of theta. Okay, coming to question number 2. Without expanding the determinant, prove that LHS determinant is equal to RHS determinant. Students, यहाँ पे उसने word use किया है without expanding, means you don't have to expand the determinant of the left hand side. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, we can simply use rows and the column operation so as to make them equal. So let's start with observing the elements of the right hand side determinant. We have the elements in the form a square b square c square a cube b cube c cube 1 1 1. ओके, जबकि लेफ्ट हैंड साइड के डिटर्मिनेंट में हमारे पास है ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी. तो ये जो टर्म्स है उससे हमको उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. द मेन इश्यू अराइजेस बिकॉज ऑफ दिस कॉलम नंबर 3 एलिमेंट्स. राइट हैंड साइड के डिटर्मिनेंट में एक भी ऐसे एलिमेंट नहीं है जहाँ पे 2 अल्फाबेट्स आर कंबाइंड टुगेदर. ओके, सो वी वांट टू गेट रिड ऑफ दिस कॉलम नंबर 3 एलिमेंट्स. तो अगर इनसे छुटकारा पाना है हमको तो वी हैव टू मेक देम सेम. ओके, तो बी सी सी ए बी अगर उनको सेम बनाना है तो वी कैन कन्वर्ट ऑल द एलिमेंट्स टू ए बी सी. तो अगर इसको ए बी सी में कन्वर्ट करना है तो मुझे R1 में A मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, R2 में मुझे B मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और R3 में आई हैव टू मल्टीप्लाई C. ओके, सो द फर्स्ट ऑपरेशन इज R1 गिव्स A टाइम्स R1, R2 गिव्स B टाइम्स R2 एंड R3 गिव्स C टाइम्स R3. दूसरा एडवांटेज स्टूडेंट्स अगर केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हमको पता चलेगा इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग A इन R1 तो दिस इज गोइंग टू बिकम A स्क्वायर A क्यूब एंड ABC. सेकेंड रो के एलिमेंट्स हो जाएंगे बी स्क्वायर बी क्यूब एंड बी सी ए. थर्ड रो के एलिमेंट्स हो जाएंगे सी स्क्वायर सी क्यूब एंड सी ए बी. ओके, एडेड एडवांटेज क्या हुआ है यहाँ पे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब भी हमको मिल गया जो रिक्वायर्ड है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि सिंस वी हैव मल्टीप्लाइड अ स्केलर ए बी सी इनसाइड द डिटर्मिनेंट यू हैव टू डिवाइड बाय दैट स्केलर ए बी सी. क्यों पता है, क्योंकि इफ यू आर मल्टीप्लाइंग अ स्केलर you are adding an extra scalar in the determinant, means student the value of the determinant gets multiplied by the scalar. तो determinant का value same रखने के लिए we have to divide by that scalar. Okay, so that the value of this determinant, original determinant, does not change. Okay student, that is why we are dividing by 1 upon ABC. Okay, now observing this determinant. ओके, तो बेसिक ऑपरेशन ये स्ट्राइक होता है कि हमको कॉलम नंबर 3 में से ए बी सी कॉमन लेना है. तो टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C3 वी आर गोइंग टू गेट ए बी सी अपॉन ए बी सी. सो वो कैंसिल होकर हमको क्या मिलेगा 1 एंड यू आर लेफ्ट विथ कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 एंड यू विल बी लेफ्ट विथ 1 1 1 इन कॉलम नंबर 3. नाउ स्टूडेंट्स यू ऑब्जर्व द RHS डिटर्मिनेंट एंड थिंक ऑफ द ऑपरेशन सो एज टू मेक देम सिमिलर. अभी कॉलम नंबर 1 में हमको 1 1 1 चाहिए तो वी आर गोइंग टू इंटरचेंज कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 1. ओके, सो द फर्स्ट ऑपरेशन में डू इज C1 इंटरचेंज विथ C3. तो कॉलम नंबर 1 में आ जाएगा 1 1 1, कॉलम 2 एज इट इज एंड कॉलम 3 में हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स यू रिमेंबर द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स कि वेन एवर एनी टू कॉलम्स आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय साइन. इसलिए हम लोग बाहर एक माइनस साइन लगाते हैं. ओके ओके, नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस डिटर्मिनेंट एंड दिस डिटर्मिनेंट वन मोर ऑपरेशन नीड्स टू बी परफॉर्म, क्योंकि हमको
ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब थर्ड कॉलम में चाहिए और ये यहाँ पे चाहिए. सो ऑब्वियसली द नेक्स्ट ऑपरेशन इज C2 इंटरचेंज विथ C3. ओके, सो इफ यू परफॉर्म दैट ऑपरेशन, तो सिंस हम लोग ने वापस दो कॉलम्स इंटरचेंज किए तो और एक माइनस साइन ऐड हो जाएगा बाहर. ओके, सो वी आर गोइंग टू गेट 1 1 1 a square b square c square a cube b cube c cube. So minus minus becomes plus and this is your determinant of the right hand side. Okay students, let's move to question number 3. Now in the third question he is just saying evaluate the determinant. Evaluate means हमको उसका value find करना है, means हमको उसको सिर्फ expand करना है. Okay, so let's start by expanding along row number 1. So if you take the first element cos alpha into cos beta and determinant of these four elements, so we are going to get cos alpha cos beta minus 0. Then take the second element, you change the sign, so minus cos alpha sin beta, cover the first row second column into determinant of cos alpha sin beta with a minus sign and minus 0. And then third element is minus sin alpha into cover the first row and the third column, so you get determinant of these four elements. तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे minus sin alpha sin square beta and minus sin alpha cos square beta. Okay students, so we have done the expansion. Now let's simplify by opening the bracket. तो ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो होगा cos square alpha cos square beta. This term multiplies here, so you get 0. So I have not shown that. Then this term multiplies with this term, so we are going to get what? Plus cos square alpha sin square beta. Okay, फिर ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हमको मिलेगा sin square alpha sin square beta. And this term multiplies here, so you get plus sin square alpha cos square beta. Okay, now comes the step of grouping the elements. तो अगर पहले दो टर्म को ही देख लेते हैं तो देयर इज cos square alpha term common between that two. So if you take cos square alpha common and इन दोनों में से we can take sin square alpha common, so we are left with this bracket which turns out to be 1. Again this bracket turns out to be 1. So we are left with cos square alpha plus sin square alpha, which again turns out to be 1. So this is the value of the determinant. Okay students, now in the question number 4, if a, b, c are real numbers and delta is equal to 0, you have to show that either a plus b plus c is 0 or a equal to b equal to c. Now students, क्वेश्चन देख के हमको बेसिक थिंग ये स्ट्राइक होता है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, रोज एंड कॉलम ऑपरेशन यूज करो, डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करो, एक्सपांड करो डिटर्मिनेंट को और फिर 0 से इक्वेट करो, सो दैट यू विल गेट सम रिलेशन विच विल बी प्रूविंग दैट a plus b plus c is 0 or a equal to b equal to c. So let's go with some rows or column operation so as to simplify the determinant. अभी केयरफुली ऑब्जर्विंग द एलिमेंट्स, हमारा फेवरेट वाला ऑपरेशन स्ट्राइक होता है हमको, एडिंग ऑल द थ्री रोज. ओके, सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म द ऑपरेशन r1 गिव्स r1 plus r2 plus r3. तो ये तीनों एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर इज 2a plus 2b plus 2c. इफ आई टेक 2 कॉमन, तो आई गेट 2 times a plus b plus c. लाइकवाइज ये तीनों ऐड होंगे तो हमको वही टर्म मिलेगा 2a plus 2b plus 2c. टेकिंग 2 कॉमन यू गेट दिस एलिमेंट and here also we get the same element. R2 and R3 remains as it is. Okay, now obvious step is taking this element outside the determinant. So taking 2 times a plus b plus c common from R1, we get d is equal to, वो बाहर आ गया, and you get 1 1 1 remaining 2 rows as it is. Okay, so if you simplify further, since हमारे पास sequence आया है 1 1 1, तो obviously we are going to use column operations and to get 2 zeros. तो हम लोग ऑपरेशन करेंगे C1 gives C1 minus C3 and C2 gives C2 minus C3. तो उससे एडवांटेज ये है कि यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, एंड सो दैट यू कैन एक्सपांड द डिटर्मिनेंट अलॉन्ग रो नंबर 1. ओके, सो इफ यू एक्सपांड अलॉन्ग द रो नंबर 1, वी आर गोइंग टू गेट, पहला एलिमेंट तो 0 ही है, फिर माइनस 0 एंड देन प्लस 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 4 एलिमेंट्स. सो वी आर लेफ्ट विथ a minus b इंटू b minus a minus of b minus c into a minus c. Okay, so now if you open the bracket over here, so we get ab minus a square minus b square plus ab. फिर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे विद द माइनस साइन, सो यू गेट माइनस ए बी प्लस ए सी देन प्लस बी सी एंड माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0. तो यहाँ पे इन द ब्रैकेट माइनस ए बी प्लस ए बी गेट्स कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विथ दिस ब्रैकेट. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये जो नंबर 2 बार बैठा है उसको हम लोग ने पर्पसली 0 के नीचे नहीं लिया. ओके, क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे उसका रोल प्ले करता है. वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2 इनसाइड द सेकेंड ब्रैकेट, तो सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यू गेट दिस ब्रैकेट. Okay, now I am taking minus sign common outside the second bracket. तो सारे एलिमेंट्स में से हम लोग माइनस साइन बाहर कॉमन ले रहे हैं, सो ऑल द एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे. ओके, सो वी गेट 2a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac.
नाउ स्टूडेंट्स, ये जो 2a² वाले टर्म्स है ना, 2a² 2b² 2c², उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो. सो आई एम राइटिंग a² प्लस b² माइनस 2ab. आपको स्ट्राइक हो रहा होगा वाई आई एम डूइंग दिस. ओके, सेकेंड ब्रैकेट में 2b² में 2b² थे तो एक b² आई एम यूजिंग ओवर हियर, एक यहाँ पे यूज़ कर लिया था, तो b², फिर यहाँ से एक c² यूज़ कर रहा हूँ एंड देन माइनस 2bc. ऑल्सो यहाँ पे जो 2a² था, एक a² यहाँ पे यूज़ किया, एक a² यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो एक c² बाकी था वो यूज़ कर रहे हैं, माइनस 2ac इक्वल टू 0. सो ऑब्वियसली दिस इज द फॉर्मूला फॉर a minus b the whole square. This is the formula for b minus c the whole square. This is the formula for c minus a the whole square. So we have got one bracket into another bracket equal to 0. So we can say that either this bracket is equal to 0 or this full bracket is equal to 0. Okay, so we did this step. Now students, एक पार्ट तो हम लोग ने प्रूव कर लिया कि a plus b plus c is 0. Now if you observe over here in the question, he has said that a, b, c are real numbers. तो अगर वो रियल नंबर्स है, ओके, तो उनका सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑल द स्क्वायर्स ऑफ द एलिमेंट्स इज 0. तो वो कभी पॉसिबल है. ओके, सिंस इट इज अ रियल नंबर, तो स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव. स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव स्टूडेंट्स. ओके, तो ये एक हमको पॉजिटिव क्वांटिटी देगा. या तो लीस्ट वैल्यू ये जो दे सकता है वो क्या है, 0. ये भी लीस्ट वैल्यू जो हमको दे सकता है वो है 0. ये भी लीस्ट वैल्यू जो हमको दे सकता है वो है 0. सो if all the three brackets are 0, only then addition of all the three terms is 0, तभी जाके पॉसिबल है. सो व्हाट इज द कंक्लूजन, दैट 0 कभी होगा ये जब भी a इक्वल टू b, ये 0 कभी होगा जब भी b इक्वल टू c, ये कभी 0 होगा जब भी c इक्वल टू a. सो व्हाट डू वी कंक्लूड, दैट a इक्वल टू b, b इक्वल टू c एंड c इक्वल टू a. सो वी कैन से दैट ऑल द थ्री टर्म्स आर इक्वल. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 5 ही हैज सेड दैट सॉल्व द इक्वेशन मीन्स वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. तो हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे एंड देन विल एक्सपांड द डिटर्मिनेंट एंड इक्वेट टू 0 सो एज टू गेट द वैल्यूज ऑफ x. सॉल्व द इक्वेशन मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x. तो इफ यू ऑब्जर्व द एलिमेंट्स, तो हमारा फेवरेट वाला ऑपरेशन वापस एक्शन में आ जाता है. वी कैन ऐड ऑल द 3 रोज और ऑल द 3 कॉलम्स. तो इफ यू ऐड ऑल द 3 कॉलम्स, वी आर गोइंग टू गेट हियर इज column 1 plus column 2 plus column 3. So you are going to get 3x plus a, 3x plus a, 3x plus a in the column number 1. Okay, now we can take this term outside the column number 1. So we get 1 1 1. जब भी 1 1 1 sequence आता है तो we perform the row operation and get the zeros. So if we perform the operation R1 gives R1 minus R2, तो उससे फ़ायदा ये है कि यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा. Okay, now since you have got 2 zeros, we can expand the determinant easily along row number 1. So we get 3x plus a into bracket 0 as it is. इसका साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस a हो जाएगा. So we cover the first row and the second column. So we get x plus a minus x and then we have 0. So we get from here a square into 3x plus a is 0. Now students, स्टार्टिंग में उसने दिया है कि a is not equal to 0. उसका एक रीज़न है क्योंकि if you say that a can be equal to 0 means you can't take this term over here. So that is why he has given the condition. तो ये टर्म को नीचे लेके जाओ and therefore you get 3x plus a is 0. So x is equal to minus a upon 3. Okay students, let's start question number 6. Here you want to prove that the value of this determinant is 4a square b square c square. So we start with the LHS determinant. Now students, carefully observe the determinant column wise. तो यहाँ पे हमको पता चलेगा कि we can take something common. Okay, so if you observe the elements carefully, we can take a common from column 1, we can take b common from column 2, and we can take c common from column 3. Okay, so that is your first step, taking a, b, c common from c1, c2, c3 respectively. So outside the determinant we get a, b, c into determinant of the remaining elements. Now students, we use rows and the column operation so as to reduce the elements further. So if we use r1 minus r2, so r1 minus r2 परफॉर्म किया तो यहाँ पे हमको मिलेगा a minus of a minus b. So you will be left with minus b. Here you get c minus b and here you get a plus c minus a. So you will get c over here. Now students, if you add row 1 and row 3, तो उससे एडवांटेज ये है कि यहाँ पे 0 आ जाएगा. Okay, so if you perform r1 gives r1 plus r3, you get 0 over here. If you add these two elements, b and b will get cancelled, so you get 2c and c plus c will give you 2c, r2 and r3 as it is. Now यहाँ पे पहुँचने के बाद यू कैन सिंप्लीफाई द डिटर्मिनेंट, मीन्स उसको एक्सपांड कर सकते हो, या तो अगर आपको एलिमेंट्स को फर्दर रिड्यूस करना है तो वी कैन गेट वन मोर 0 बाई परफॉर्मिंग द ऑपरेशन c2 गिव्स c2 minus c3.
तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा. Here you will be left with b minus a and here you will be left with b. So now since we have got two zeros, we can expand the determinant along row number 1. So we get ABC into 0 minus 0 plus 2c into determinant of these four elements. So we get BA plus B square minus B square plus AB. So B square and minus B square will get cancelled and AB plus AB हमको मिल जाएगा 2AB. So if you simplify, we are going to get 4A square B square C square. Okay students, let's move to question number 7. In question number 7, we have been given A inverse, we have been given matrix B. You want to find AB inverse. Now students, AB inverse का formula क्या होता है? It is B inverse into A inverse. So we have A inverse with us. So our job is to find B inverse. So we can find that by adjoint method. Now you remember the formula for B inverse by adjoint method. It is 1 upon determinant of B into adjoint of B. तो पहले हम लोग क्या find करेंगे? Determinant of B. So we expand along the first row. So you get 1 into determinant of these four elements. So you get 3 plus 0 and then minus 2 into determinant of these four elements. So you get minus 1 minus 0 and then minus 2 into determinant of these four elements. So we get 2 minus 0. So if you simplify, you are going to get 1 which is not equal to 0. Therefore we can say that B inverse exists. Okay, now to find adjoint of B, we are going to find all the 9 cofactors. I hope students you are very well familiar with this method और अभी आपने बहुत सारे सम प्रैक्टिस कर लिए हैं. तो you can easily find the adjoint of B. Once you find the adjoint of B, write the formula, put the values. So we know adjoint of B, we know determinant of B, so hence we have got B inverse. तो एक बार आपको B inverse मिल गया है तो we can now use the formula AB inverse is B inverse into A inverse. B inverse का वैल्यू पुट करो, A inverse का वैल्यू पुट करो and matrix multiplication you can easily perform and hence you get your answer for AB inverse.